सहित विंग कमांडर उत्पल कुंडू जोड़ी होती। विंग कमांडर कुंडू स्वागत करी एवं ये जो अघटन घटी आपणकर यथेष्ट अभिज्ञता रही माने फ्लाई करिवार जो जो भली भाव में प्रारंभिक सूचना आसूची जमती आशंका कराउची विभिन्न दृष्टिकोण जे कौन पाई क्रैश होई पारे भयंकर प्लेन क्रैश जेतु होईची कौन कहिबे जे ए प्रकार अघटन ए प्रकार दुर्घटना केमिति घटिला। नमस्कार, एटा गोटे बहुत दुखर विषय एंड मु कहबी टोटली अवॉइडेबल बिकॉज एटा 99-100% कंफर्मेशन मु कहि पारे कि दीटा इंजन जाक एका संगे रे बंद हो जाइछि। माने टेक ऑफ परे एमिति गोटे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इट इज वन ऑफ द वर्क हॉर्सेस जाको को है वर्ल्ड वाइड एमिति माने दीटा इंजन न फेल हेले complete full load sangere bhi eta mane that can survive, that can continue with the takeoff and come and land safely at some place. Otherwise the rate of climb jota ki normal hue seta no kari pare gote engine fail hele second engine dwara it can still get away from that ground and come back and land. Kintu eta to the ekha dekha ho just 625 feet take off karina height gain kar chala 625 feet माने it is not even 1 minute. Maybe 45 seconds or 30 seconds after takeoff, both the engines are failed. दीटा engine जाको एक्का संगे fail होइथिबो जेतिपाई माने there is no height available to relight the engine. जदि एटा एयर रही था दीटा engine जाको एक्का संगे जदि 30,000 feet या 35,000 feet रे जदि आइता था then the pilots could have relighted the engine. नहीं विंग कमांडर कुंडू किंतु माने टेक ऑफ करूथला तेणु अल्टीट्यूड जी पाइबा कथा जी हाइट पाइबा कथा से पाइला नहीं कि ना 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 बिल्कुल नहीं। द रेट ऑफ क्लाइंब फॉर दिस काइंड ऑफ मशीन इज क्वाइट हाई। कम से कम 2000 फीट रेट ऑफ क्लाइंब स्टार्ट क्लाइंबिंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड किंतु एई एयरक्राफ्ट का जस्ट 625 फीट हाइट गेन करि पातला किंतु हठात भाव में दुईटी जाक इंजन कम फेल करिथिबो 100% माने ए प्रकार संभावना भी रही छी। Definitely there is a major technical issue जो सिपाही बना दीटा जब इंजन एक का संगे ही they backed up, they did not give any power because they have taken off for a long haul 9 घंटा of flight to land, but the amount of fuel that was there is quite high, but 100% sure it was not overloaded because this aircraft can carry 300 odd passengers जो तरीके माने 242 जण अछन खाली तो इट वाज नॉट ओवरलोडेड तो ओवरलोड क्वेश्चन इज आउट तो इवन विथ वन इंजन द एयरक्राफ्ट 242 जण टोटल रहिथिले मध्ये तांकर लगेज मध्ये रहिथिबो ना फ्यूल मध्ये फुल थिला द एयरलाइन इज स्कैटर्ड फॉर द मैक्स पॉइंट विथ 300 passengers along with luggage total weight and balance setup definitely it is within limits kintu major accident only happens when there is big technical failure. Pilot error hai paribo nahi karan that is a take off phase. Weather was absolutely clear, 100 kilometer visibility thila city, there was no rains, no cloud, so the weather is absolutely out of question कि मतलब weather related जो तरीके से pilot error hai pare kintu ethire किंतु गोटे कथा मध्य चर्चा भीतर को आसुथिला माने एई विमान को चलैथिबा कैप्टन मनमथ राउतराय मध्य आम सहित रहिथिले तांकर गोटे आशंका रहउतला जे एयर डेंसिटी कथा जेतु टेम्परेचर इज क्वाइट हाई। ना 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 बिल्कुल आई विल टोटली नेगेट दैट थिंग बिकॉज़ these machines are top notch machines जो तरह की माने वेदर इवन दे कैन गो थ्रू जब माने वेदर फेनोमेना जो डाउन ड्राफ्ट को आवे माइक्रोबर्स्ट को आवे यदि इनके से एनकाउंटर भी था माइक्रोबर्स्ट मे बी आप अगर एस्टिकेट डेटा इंजन रे कि दे कैन नेगोशिएट दैट थिंग तो ए वेदर रे कौन सी ये नहीं मो कैटेगरीली कहि परिबो ने डेटा ब्लैक बॉक्स रे भी आसीबो निश्चय कि दीटा जक इंजन साइमल्टेनियसली फेल करछि आ सेति पे द पायलट्स हैव गॉट नथिंग और जदि देखिबे जब विजुअल्स छी the aircraft is in a position where it is when a photograph dekha into the landing passengers in a takeoff attitude it is in a landing attitude that means the power loss is
and the pilots are drastically trying to keep the aircraft airborne or to get the maximum glide. So the attitude of the aircraft is becoming a landing attitude. लैंडिंग गियर मध्य खोला रही डाउन रही जहाँ आम देखुलु That is because after takeoff there is a series of things that happen. So we do gote par gote maine pratham flaps uthave, gears par pratham uthave. Maybe before they realized, I don't know, gears upar immediately karega tha, kintu essere the gear down is there, they must not have time to retract the gear. Aguru hi se mane just unstick kare pari they must have experienced the loss of power. They would have, the first action after getting airborne is positive rate. But we move away from the immediate action is gear up. किंतु ऐसा जो gear मो देखिनी मो जाननी है विषय किंतु यदि gear जो down था, that means the pilots have been distracted to such an extent because of a major thing coming up. ओके विंग कमांडर कुंडू जो कथाटी आपण कहउछंती अर्थात बेसिकली जो तथ्य गुड़िक माने हठात भाव में दुई दुईटी इंजिन फेल करवा ये गोटे अस्वाभाविकता हो पारे ऑल इन ए सडन हो पारे किंतु ये घटनाटी जो जो भाई आप जहाँ कहले ब्लैक बॉक्स मिलवा पर आहरी तथ्य स्पष्ट भाव में आसब किंतु प्रारंभिक भाव में जो आलोचनाटी आम करुचे जेहेतु गोटे लंबा समय उड़ान करिवार लक्ष्य रखी ये विमानटी आगौला से समय ए प्रकार दुर्घटना घटिला अर्थात निश्चय केउठी ना केउठी जो माने ताकू परीक्षण करिथिबे चेक करिथिबे सेठी कुछ भूल थाई पारे अर्थात माने जो ग्राउंड लेवल रे जो चेक गुडी होई थाए माने एयरपोर्ट रे जो चेक होई थाए ताकू ठीक भाव रे करा गला नाही की that I will not be able to comment at this stage कारण माने सेटा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पर जणा पड़ियो एग्जैक्टली कोन हेई छला किंतु before any aircraft is launched, the checks are definitely carried out, and Air India, the engineers are also very, very professional. किंतु को जगह ऐसा चूक है ची, definitely कौन इस जगह कोटे चूक है ची, माने there definitely some place something has been overlooked or something has given way. यही aircraft का 6 मास आगे भी technical issue पाई लंदन रे ground ही चला, तो अच्छा Air India, there is a little bit of the same aircraft. The same aircraft. Okay. And the passengers were stuck. So, the same aircraft had a technical issue earlier also. So, many aircraft have technical issue, but the severity of the issues make the difference. So, exactly कौन है चला, यही करा कौन है ची, after the investigation report comes up, there it will be clear. But definitely, it is a major technical failure. Pilots role is bilkul nathimo karana they have just taken off and there that is the time when for a pilot both the pilot and the co-pilot are 100% 110% aware of anything that is happening. Their adrenaline level is high because they know takeoff is more dangerous than a landing and this exactly proves that. आज्ञा किंतु माने जेतेबेले टेक ऑफ करथिबे सेतेबेले कोनोसी टिके भनक मध्ये लागि नथिबे कोनोसी सूचना भी से पाई पारि नथिबे जे कोन माने एभली गोटे असुविधा रहिछि जोथि पय इंजिन फेल भी करि जाई पारे करेक्ट से माने दे मस्ट हैव एनी इंडिकेशन कारण अदरवाइज इंडिकेशन आते they could have aborted right up to unstick मतलब जनरली हमें we have something called V speeds after we at which we can unstick. And before that we stop the aircraft on the ground, but definitely Ahmedabad airfield is a long runway, but if V speed cross bhi kariye and still they find that there is a technical issue, they could have still stopped the aircraft on the runway, but aircraft is damage hai pare kintu ei situation jo aji hai ji till take off everything was normal, they did not get any indication. आम देखुचु पूरा शेष पर्यंत पूरा फ्लाइट जमती नॉर्मली स्वाभाविक भाव में उड़िला भाया रही हठात जाकि माड़ होची एवं क्रैश करुची जहाँ सूचना रोची गोटे घर गोटे बिल्डिंग रे क्रैश करिछि बोली Correct. That is on the takeoff leg. Ahmedabad I have been operating for the last 35 years. Again. And takeoff leg there are lot of civil constructions. It मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल चला जो थे मैंने क्रैश कर
exactly on the takeoff leg. माने aircraft का left right बिल्कुल है ही नहीं. माने just take off करेंगे and then they have realized that there is something wrong in the aircraft. They have tried to rectify it, but the time available to them was so minimal that they cannot do anything. कौन सी सेठी सुजोग न थाए निश्चय पायलट चेष्टा करथिबे किछि ना किछि करिबा पय सेठी स्कोप कोन थाए तांग पाखरे एही सिचुएशन रे बोथ इंजन फेल्स तांग पाखरे कौन सी किछि नाही कारण वी ऑलवेज कैटर फॉर माने दीटा इंजन एटा तांग गोटे इंजन फेल करिसे बोली माने दैट इज द कंटीजेंसी दैट वी टेक एंड वी प्रिपेयर आवरसेल्फ वी इन द सिमुलेटर वी प्रैक्टिस n number of times कि गोटे इंजन फेल एंड फुल लोड संगरे how to go about it, and every pilot is checked every 6 months. It can be given the job there. He must be a very experienced pilot to fly this mission, and he would have been checked in the last 6 months itself. विंग कमांडर कोंडू गोटे साधारण लोकर प्रश्न हिसाब रे म आपन प्रश्नटी आपन सामने प्रश्न रखिबा को चाहिबी जे सेही विजुअलिटी को जो भली भाव रे फ्लाइट उडुची एवं परवर्ती समय क्रैश करूची सेही समय जो माने विजुअल को ताकू मध्य मु देखुथिली एवं सेथिरे जो शब्द आसुची शेष पर्यंत माने इंजन जेमती रन करूची शब्द आसुची सेथिरे कोनसी प्रकार डिप्लीशन आमे देखु नाहु तथापि आशंका करा जाई पारे जे डबल इंजन फेल करिछि माने इंजन that sound may be from some other place, but that is not the engine sound, that's for sure. कारण engine जदि थाए that is the heart of the aircraft. No other thing is critical, more critical than the engine. Our good engine is sufficient to make this aircraft fly. It will fly for a long period of time. But even in takeoff leg, it can good engine failure maybe at the moment there is go unstick. When takeoff करला good engine fail ला, then the aircraft can maintain a lesser rate of climb. जोटा normal rate of climb 2000 to 2500 feet, सेटा न होई पारे. किंतु definitely we can maintain a rate of climb of at least 500 to 600 feet per minute and get away from the earth, go to a safe altitude, see what is the damage, and then if required light the second engine if it is feasible. माने यदि निया न लगी थाए, यदि engine surge नहीं थाए, then we relight the other engine and then we come in for a priority or emergency landing. तार्थ ये पूरा संपूर्ण आपण अभिज्ञता आपण कहउछंती जे ग्राउंड स्टाफ जो जेमती चेक करबा कथा से माने करि नाहंती जोथि पाए प्रकार स्थिति हेछि एवं जेमती लागुछि जे गोटे विपद भीतर को समस्त को से माने ठेली देले. No, I will not blame anyone directly now, but I'm 99%, 100% sure it is a technical failure. How eight on once it the black box and everything, the flight data recorded, every parameter is recorded. Anything and everything that happens in the cockpit, both the machine as well as the crew with everything is recorded. So, and everything is recorded in microseconds, more or less. But a good second, 100 times, 1359. So 1359 to 1400 with a good minute ko 100 times split karina, say recording channel. Every frame is there. So everything will come in if the black box is absolutely safe. But even a crash rate, kete percent say black box can be retrieved, this is also a big question. But fuel there is, you cannot imagine the amount of fuel that is in that aircraft. से भी गोटे बहुत बड़ा प्रश्न रही है मे डे कॉल शेष मुहूर्त पायलट कर अर्थात कौन सा ऑप्शन ना I am not very sure कि मे डे कॉल कर at that kind of critical situation they really are busy to, because this is something that is it is the worst nightmare of a pilot कि both the engines will fail. So same time they try to retrieve the thing कि in case to cushion the landing lower gear को lower कर दे, that can also be also be a criteria कि landing gear landing retract then they lower the landing gear, at least the landing gear will take the cushion. So so that is the time if they have managed to give a mayday call, they could have given a call to engine failure. The immediate call will be in a case like this, mayday, engine failure. So this is just a crisp call.
the nature of the emergency is also given within the Megacom. तो ये आरटी जो रिकॉर्डिंग है 80 रे सेतरे जଣା पड़ियो कि कोन हेतरा से एग्जैक्ट सेकंड रे। बहुत बहुत धन्यवाद विंग कमांडर उत्पल कुंडू आम सहित दीर्घ समय आलोचना रही अधिक तथ्य आम सहित शेयर कर परवर्ती समय आशा करूँ आम सहित जिते नुआ नुआ सूचना आसूची ताकू नहीं आम आप सहित तर्जमा करें। बहुत धन्यवाद वर्तमान आम सहित आलोचना रही।